हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम देख रहे हैं पाइथन सीरीज इन हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने इफ और एल्स देखा था गाइस पाइथन में। आज हम देखेंगे इफ एल्स में एल्सिफ कैसे यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम यूजर से एज इनपुट करा ही रहे हैं। यहाँ पे लास्ट वीडियो में भी हमने कराया था। एज की बेसिस पे हम कुछ कंडीशंस लगा लेते हैं कि यदि एज हमारा जैसे सपोज कीजिए आप एक सर्कस देखने गए हैं, वहाँ पे एज जो है उसके हिसाब से आपको कंसेशन मिल रहा है टिकट परचेज करने में। तो यदि एज 10 है, उससे नीचे सपोज कीजिए टिकट फ्री है, या 10 से लेके 50 तक या 20 तक कुछ अमाउंट है, उसके ऊपर डिफरेंट अमाउंट है, और 60 के ऊपर कुछ कंसेशन दिया गया है। उसमें हम एक बार इसको सेट करके देखते हैं। अगर हम बोलते हैं कि एज इज less than 10, so we can say the ticket free, and if age is greater than 10 and age is less than 20, so we can say कि अगर ऐसा है तो टिकट price is 20 rupees. Like that we can print. And if we can say else if age is greater than 20 and age is less than 60, so we can say that the ticket price is 40 rupees. Else the price is 10 rupees. Like if the age is greater than, you can say 60, or so let's run this. Line number 4, क्या एरर हो गई है? लाइन नंबर 4 में एज हमारा जो है, कोई एरर तो नहीं होनी चाहिए थी। इनपुट प्लीज इंटर योर एज। एज हम इनपुट करा सकते हैं। एक्सपेक्टेड इंडेंट, सॉरी यहाँ पे हमने जो है आई थिंक स्पेस दे दिया है, इसीलिए इस एरर हो गई है। सो लेट्स रन अगेन। सो अभी अगर हम सबसे पहले 10 के नीचे डालते हैं सपोज, सो योर टिकट इज फ्री। सो इफ वी रन अगेन and if we like 34, so ticket prices, and if we enter 60, more than 60, so price is 10 rupees. So like that we can use if and else if. So guys, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे while loop and for loop. And if you like the video, please share and subscribe. Thanks.